हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में, क्लास 11। ठीक है, चलिए इसको आज हम शुरू करेंगे। फुल एनसीईआरटी कवर होगा इस वन शॉट में। आपको इस लेक्चर को देखने के बाद कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डैश के शुरू करते हैं। और चलिए, तो सबसे पहले है when you look around। आज गला खराब है थोड़ा। You see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is that inanimate thing that does not have living thing, does not have which a living thing has। तो कौन सा चीज है जो कि लिविंग थिंग में है और नॉन लिविंग में नहीं है। द आंसर इज टू दिस प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजिंग। तो सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजिंग है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। some are composed of single cell and are called unicellular organism, while others like us composed of many cells are called मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो बहुत सारे सेल से बनता है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल। Unicellular organisms are capable of independent existence, performing the essential functions of life. Anything less than a complete structure, anything So unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं टू परफॉर्म द एंड परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो करते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कुछ भी छोटा है सेल से, वो प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं किया जाता है। Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms। सेल एक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब है एंटन वोन ल्यूवेनहुइक। कौन है एंटन वोन ल्यूवेनहुइक? फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड लाइव सेल। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइव सेल। ठीक है, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइव सेल। ओके, समीर सिरकोट, क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहुइक जो था वो फर्स्ट लाइव सेल डिस्कवर किए थे। ठीक है, फर्स्ट लाइव सेल देखे थे। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो न्यूक्लियस लेटर में बाद में डिस्कवर किए थे। ठीक है, बाद में डिस्कवर हुए थे। जो है आपका न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है। तो रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस डिस्कवर किए थे और एंटन वॉन ल्यूवेनहुइक फर्स्ट सेल देखा था, वो भी
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के वजह से ही all the structural details of the cell हमको मिला था। तो ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। In 1838, Matthias Schleiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant. At about the same time, Theodore Schwann, 1839, a British zoologist, तो मैथियस लाइडेन जो था 1838 में जर्मन बोटनिस्ट था और लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ऑब्जर्व किए थे, एग्जामिन किए थे और ऑब्जर्व किए थे। ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। तो ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड है, मतलब उसमें सेल अलग है। प्लांट्स में पहले माना जाता था कि एक टाइप के ही सेल होंगे, पर जर्मन बोटानिस्ट जो है थियोडर शॉन, वो पाए थे कि प्लांट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, composed of different types of cell which form the tissues of the plant। ठीक है, टिश्यू ऑफ द प्लांट बना रहे थे। At about the same time, Theodore Schwann, 1839, a British zoologist, Theodore Schwann एक ब्रिटिश zoologist थे, studied different types of animal cells, वो animal cell के ऊपर काम कर रहे थे, and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane। सेल का जो है उसमें thin outer layer है जो कि आज के दिन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम जानते हैं। He also concluded that based on his studies on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells। ठीक है, तो एनिमल में जो है एक आउटर थीन लेयर प्रेजेंट था। वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडर शॉन डिस्कवर किए थे कि एक एनिमल सेल में थीन आउटर लेयर है जो कि आज के दिन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। He also concluded based on his studies on plant tissues that the presence of cell wall is a unique character in living organism। Presence of cell wall is a unique character in living organism। ठीक है। On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of the animals and plants are composed of cells and products of cells। तो थियोडर शॉन ही ये हाइपोथेसिस दिया था, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गेन, वो बाद में आएंगे। पर ये दोनों हाइपोथेसिस मैथियस श्लाइडेन और थियोडर शॉन दोनों ने मिलकर एक हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल से बनते हैं और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बनते हैं। Schleiden and Schwann together formulated the cell theory। दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी बनाया और वो बनाकर दोनों चले गए। कहाँ चले गए? मर गए। रूडोल्फ विर्शो फिर 1855 first explained that the cells divided and new cells are formed from pre-existing cells। तो से रूडोल्फ विर्शो 1855 में ये बताया कि सेल्स डिवाइड कहाँ से, वो लोग कहाँ से आते हैं सेल वो नहीं बताए थे। वो सिर्फ बताए थे कि एनिमल और प्लांट सेल से बनते हैं और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। तो न्यू सेल्स कहाँ से आते हैं, सेल कहाँ से आते हैं, वो नहीं बता पाए थे। तो रूडोल्फ विर्शो 1855 उसने बताया कि सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, प्री मतलब जो पहले सेल थे उसमें से ही आता है। He modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give the cell theory a final shape। उसने मॉडिफाई किया था, स्लाइडेन और शॉन जो सेल थ्योरी दिया था उसको मॉडिफाई किया था। सेल थ्योरी इज अंडरस्टैंड टुडे इज all living organisms are composed of cells and product of cells। all cell arise from pre-existing cells। तो सारे सेल arise करते हैं pre-existing cells के द्वारा। तो ये दो थ्योरी आपको याद रखना चाहिए। all living organisms are composed of cells
एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब नेक्स्ट है एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, कमेंट कीजिए, जो लोग देख रहे हैं कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ सेल, जो कि सिर्फ 10 मिनट ही टाइम लगेगा हम लोग को। ठीक है, समरीन सिरखोट लास्ट कमेंट है। चलिए, तो एन ओवरव्यू ऑफ सेल शुरू करने से पहले आप, मैं पानी पी लेता हूँ। You have earlier observed cells in an onion peel or human cheek cells under microscope। आप अगर स्कूल में पढ़ते हो तो देखे होंगे, ऑनियन पील में दिखाया जाता है, या ह्यूमन चीक में तो मेडिकल कॉलेज में दिखाया जाता है। तो उसमें जो एक पतला सा पील लिया जाता है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं हम, तो उसमें सेल्स दिखाई पड़ते हैं। लेट अस रिकलेक्ट दिस स्ट्रक्चर। The onion cell, which is typical a plant cell, the onion cell, which is typical a plant cell, ठीक है, the onion cell, which is typical a plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane। उसका अंदर ही सेल मेम्ब्रेन है। तो ऑनियन सेल जो कि है प्लांट सेल, उसके has a distinct cell wall, cell wall तो है ही, as its outer boundary, आउटर बाउंड्री जो है उसमें सेल वॉल है, उसके अंदर जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, जस्ट विद इन इट। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। और आउटर मेम्ब्रेन ह्यूमन चीक में भी आउटर मेम्ब्रेन होता है, पर वो सेल वॉल नहीं होता, क्योंकि हम एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। The cells of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane-bound structure called nucleus. Inside each cell के अंदर एक dense membrane-bound structure है, जो कि nucleus है। The dense nucleus contains the chromosome, which in turn, the dense nucleus structure तो डेंस न्यूक्लियस स्ट्रक्चर जो है, कहा गया है, वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, द डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम। इस न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम रहता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, और उसका नाम है डीएनए। तो सेल के अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड मतलब उसका भी एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब उसका एक पट्टी सा है, उसके अंदर क्रोमोसोम है, जो कि क्रोमोसोम में हमारा डीएनए है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, सेल्स जो जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है, मतलब जिसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। उसको
यूकैरियोटिक बोला जाता है, whereas cell that lacks membrane bound nuclei are called प्रोकैरियोटिक। जिसका न्यूक्लियस खुला सेल के अंदर पड़ा रहता है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और जिस सेल का न्यूक्लियस उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन बाउंड रहता है उसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। Cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane-bound nucleus are called prokaryotic. In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. तो both cell में जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टाइप के सेल है उसमें एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, मतलब को हम क्या बोले, डेंस लिक्विड जो होता है एक पूरा सेल में भरा रहता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द साइटोप्लाज्म is the main arena of cellular activities in both plants and animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in a living state. Beside the nucleus, eukaryotic cells have other membrane बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलिस। न्यूक्लियस के छोड़ के भी बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, microbodies and vacuoles. The prokaryotic cells lack such membrane bound organelles. तो यूकैरियोटिक सेल में अदर ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट है और उसमें है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। बट प्रोकैरियोटिक सेल में जो अदर ऑर्गेनेलिस है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, वो खुला खुला नेकेड पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए राइबोसोम्स क्या होता है? A non-membrane bound organelle is found in all cells, both eukaryotic as well as prokaryotic. राइबोसोम जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है, ये एक एक्सेप्शन है। आप यूकैरियोटिक में भी आपको राइबोसोम मिलेगा, और राइबोसोम अगर यूकैरियोटिक में मिला तो वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, वो ऐसा ही नेकेड पड़ा रहेगा। और ये दोनों में मिलते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो इन द टू ऑर्गेनेलिस, क्लोरोप्लास्ट in plants and mitochondria and rough ER. Animal cells contain another non-membrane bound organelle called centrosome जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। Animal cells contain non-membrane bound structure called centrosome। अच्छा, सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, सेल बहुत साइज में डिफर करते हैं, शेप में भी और एक्टिविटीज में। फॉर एग्जांपल mycoplasma, the smallest cells are only 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 micrometer in length.
बैक्टीरिया का लेंथ है 3 to 5 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है 0.3 माइक्रोमीटर। उसका है Mycoplasma. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Egg of ostrich is the largest isolated single cell. Or among multicellular organism, human red blood cells are about 7.0 micrometer in diameter. Nerve cell are some of the longest cell. Nerve cell longest cell होता है. Cell also vary greatly in the shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। तो ये इतने सारे हो सकते हैं, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। ठीक है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। सेल का जो है द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उससे वेरी कर सकते हैं। जैसे अर्थ की शेप है उसी तरह फंक्शन करेगा। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये था बेसिक्स। अब आज घुस रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। Prokaryotic cells. Prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, and PPLO, that is Leudopneumonia-like organism. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, and PPLO, Leudopneumonia-like organism. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. ये smaller होते हैं और multiply करते हैं more rapidly than the eukaryotic cell. They may vary greatly in shape and size. ये vary करते हैं great shape and size में. The four basic shapes of bacteria are bacillus, rod-like, coccus, spherical, vibrio, comma-shaped, and spiralum, spiral.
The organizing prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, and PPA-low pneumonia-like organisms. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा rapidly multiply करते हैं. They may vary greatly in shape and size. ये shape and size में greatly vary करते हैं. The four basic shapes of bacteria are rod-like, bacillus, coccus, spherical, vibrio, comma-shaped, and spiralum spiral. ठीक है. The organism of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotics exhibit a wide range of shapes and functions. Prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. तो prokaryotes में cell wall है except mycoplasma. The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. There is no well-defined nucleus. Nucleus नहीं है. The genetic material is basically naked, not enveloped by a nuclear membrane. Genetic material जो है वो basically naked है, not enveloped by nuclear membrane. And in addition to the genomic DNA, the single chromosome or circular DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmid DNA. The plasmid DNA confers certain unique phenotype characters to such bacteria. One such character is resistance to antibiotics. In higher class, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. Nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells except for ribosomes. No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells. जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है वो यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता. और प्रोकैरियोटिक सेल में जो मिलता है राइबोसोम वो यूकैरियोटिक सेल में भी मिलता है. ठीक है, चलिए. Prokaryotes has something unique in the form of inclusions. A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotics. They are essentially infoldings of cell membrane. A specialized differentiated form एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन है जो कि मेसोसोम बोला जाता है. इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक्स. दे आर एसेंशियल इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. एसेंशियल इनफोल्डिंग्स होता है सेल मेम्ब्रेन के लिए. ठीक है, यही था प्रोकैरियोटिक्स. फिर से एक बार बता दे रहा हूँ. ठीक है, चलिए. द प्रोकैरियोटिक सेल्स are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, and PPA-low. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. ये smaller होते हैं और multiply more rapidly than the eukaryotic cell. They may vary greatly in shape and size. ये greatly vary करते हैं shape and size में. The four basic shapes of bacteria are Bacillus, rod-like, coccus, spherical, vibrio, and spirillum spiral. The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide range of shapes and functions. Prokaryotes wide range of functions provide करते हैं. Prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. Prokaryotes में cell membrane होता है, सेल वॉल होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा जो एक्सेप्शन है प्रोकैरियोटिक्स में. द फ्लूइड मैट्रिक्स जो है वो साइटोप्लाज्म है. देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोल के कुछ नहीं है, सब नेकेड पड़ा रहता है. द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. In addition to the genomic DNA,
genomic DNA is a single chromosome or circular DNA. Many bacteria have a small circular DNA outside the genomic DNA. एक जो क्रोमोसोम डीएनए पड़ा रहता है उसके आउटसाइड एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए पड़ा रहता है, जो कि जिसको आप जीनोमिक डीएनए बोल रहे हो, उसके बाहर उसके पास एक सर्कुलर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए पड़ा रहता है। दिस स्मॉल सर्कुलर डीएनए को बोला जाता है प्लाज्मिड। This plasmid DNA confers certain unique phenotype characters to such bacteria. One such character is resistant to antibiotics. In higher class, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation. With foreign DNA, nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cell. Except for ribosome, prokaryotes are something unique in the form of inclusion. A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes. They are essentially infoldings of the cell membrane. चलिए, नेक्स्ट है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ठीक है, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। चलिए, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ये क्या है?
Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemical complex cell envelope. तो मोस्ट जो प्रोकैरियोटिक सेल है पार्टिकुलरली बता दिया कि बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. द सेल एनवेलप जो है कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड थ्री लेयर स्ट्रक्चर. द आउटरमोस्ट जो है ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, outer structure, second cell wall, third plasma membrane. Although each layer of the envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit. Each envelope जो है वो different functions provide करते हैं और but act as a together as a single protective unit. Bacteria can be classified into two groups on the basis of the differences in the cell envelope. बैक्टीरिया जो है वो दो ग्रुप्स में आप डिफरेंस कर सकते हैं and the manner in which they respond to the staining procedure developed by gram-Wiese. Those that take up the gram stain are called gram-positive bacteria and others that do not are called gram-negative bacteria. ठीक है, तो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन लेता है, those that take the gram stain are called gram positive bacteria, those that do not are called gram negative bacteria. Glycocalyx differs in composition and thickness among the different bacteria. आप अगर different bacteria उठाएंगे तो उसमें ग्लाइकोकैलिक्स का जो composition है और thickness है वो आपको different मिलेगा. It could be a loose sheet called the slime layer in some, while in others it may be thick and tough called the capsule. The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. The plasma membrane is selectively permeable in nature and interacts with the outside world. This membrane is similar structurally to that of eukaryotes. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर भेजने का काम करता है. A specialized membranous structure is the mesosome, which is formed by the extensions of plasma membrane into the cell. Mesosome जो बना है, these extensions are in the form of vesicles, tubules and lamella. ठीक है, ये लेवेला और विश्व एक जैसा है. दे हेल्प इन सेल डिवीजन, फॉर्मेशन, डीएनए. जो मेसोसोम है वो क्या क्या उसका फंक्शन है? दे हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, और डॉटर सेल का डिस्ट्रीब्यूशन करता है. दे ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. ठीक है, ये सब करते हैं. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores which contain pigments. Bacterial cells may be motile or non-motile. If motile, they have thin filamentous extensions. अगर motile है तो filamentous extensions है from their cell wall called flagella. Bacteria shows a range in number and arrangement of flagella. Bacterial flagellum is composed of three parts: फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. बैक्टीरियल जो फ्लैजेलम है वो थ्री पार्ट्स में आपका कंपोज्ड है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी में. द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड. फिलामेंट जो है वो है लॉन्गेस्ट पोर्शन है और वो आपका एक्सटेंड करता है फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड. तो बैक्टीरिया अगर मोटाइल है, number of bacterial flagellum is composed of three parts: filament, hook, or basal body. Besides flagella, pili and fibri are also surface structure of the bacteria. They do not play a role in motility. The pili are elongated tubular structure made up of special protein that is pili. The fibri are small bristle-like structures sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help to attach the bacteria to rocks and streams.
एंड ऑल्सो द टू द होस्ट टिश्यू। तो चिमड़ी हेल्प करता है आपका रॉक्स और इन स्ट्रीम्स और होस्ट टिश्यूज में। और पीली इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो मेड अप ऑफ माइलिन प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन यहाँ एनसीईआरटी में बोला है। Beside flagella, pili and fibri are also surface structure of the bacteria but do not play a role in motility. चलिए नेक्स्ट राइबोसोम एंड इंक्लूशन बॉडीज। In prokaryotes, ribosomes are associated in the plasma membrane of the cell. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and are made up of ribosome जो prokaryotes में है are associated with the plasma membrane of the cell. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size. राइबोसोम का साइज है 15 नैनोमीटर और 20 नैनोमीटर and are made up of two subunits, that is 50S and 30S, which together represent 70S prokaryotic ribosome. Ribosome are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome. The ribosomes of a polysome translate the mRNA into protein. The ribosome of the polysome translate the mRNA into protein. तो polyribosome क्या है जो mRNA से ribosome may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome. What are inclusion bodies? Reserved material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body. They are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm. ठीक है, phosphate granule, cyanophysin granule and glycogen granule gas vacuoles are found in blue, green and purple and green photosynthetic bacteria. ये सब prokaryotic cell का inclusion body है। फिर से बोल दे रहा हूँ, reserved material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm and in the form of inclusion body that are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm. Phosphate granules, cyanophysin granules, and glycogen granules. Gas vacuoles are found in blue-green algae and photosynthetic bacteria. ठीक है, चलिए चलिए द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द। अब यूकैरियोटिक सेल शुरू करेंगे उसके पहले छोटा सा हम लोग ब्रेक लेना पसंद करेंगे।
The eukaryotes include all the protists, plants, animals, and fungi. Okay, the eukaryotes include all the protists, fungi, protists, plants, animals, and fungi. In eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. यूकैरियोटिक सेल्स में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन है किसके थ्रू थ्रू द प्रेजेंट ऑफ यूकैरियोटिक थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एक्सटेंसिव compartmentalization है यूकैरियोटिक सेल्स possess an organized nucleus with a nuclear envelope. Eukaryotic cells possess an organized nucleus with a nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. Their genetic material is organized into chromosomes. Their genetic material is organized into chromosome. Okay. All eukaryotic cells are not identical. Plants and animal cells are different as the former possess cell wall, plastids, and a large central vacuole which are absent in animal cell, जो कि animal cell में absent. On the other hand, the animal cells have centrioles which are absent in almost all plant cells. Okay, animal cell have centrioles which are absent in almost all plant cells. Now next topic, it is cell membrane. The detailed structure of the plasma membrane was studied only after the advent of electron microscope in 1950s. सेल मेम्ब्रेन का जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो हम जान ही पाए थे आफ्टर 1950 जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप निकला. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells, enable the scientist to deduce the possible structure of plasma membrane. But 1950 जाते जाते उसके आगे ह्यूमंस हम लोग आरबीसी का जो ह्यूमन सेल में आरबीसी उसको देख के पॉसिबल जो सेल मेम्ब्रेन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हम खोज पाए थे. These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and protein. The cell membrane is mainly composed of lipids and protein. The major lipids are phospholipids that are arranged in bilayer. So these studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipid and protein. Cell membrane lipids और protein से ही बना है. The major lipids जो है वो है phospholipids that are arranged in a bilayer. Bilayer में arranged है.
Also the lipids are also the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner side. पोलर हेड जो है वो आउटर साइड में आप डायग्राम पे देख पा रहे हैं, आउटर साइड में अरेंज है और हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट. This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. तो नॉन पोलर जो टेल है वो एक्वस इन्वायरमेंट से बचा हुआ है. ठीक है. This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. In addition to phospholipid membrane also contain cholesterol. Phospholipid membrane also contains cholesterol. Okay. So later biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses protein and carbohydrate. Cell membrane also possesses protein and carbohydrate. Okay. तो पहले पता चला कि लिपिड्स और प्रोटीन से बना है. फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन मेजरली फॉस्फोलिपिड. पोलर हेड आउटर साइड पर है और नॉन पोलर टेल इनर साइड पर. और सेकेंड पता चला कि इसमें प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी है. द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज considerably in different types of cells. In human beings, the membrane of the erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipid. ह्यूमन जो एरिथ्रोसाइट है मतलब आरबीसी उसमें 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड्स. ठीक है. Depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral and peripheral. Depending on the ease of extraction, membrane protein जो है can be classified as integral and peripheral. Peripheral proteins lie on the surface of membrane. Peripheral protein जो होता है वो surface पे lie करता है और integral proteins are partially or totally buried in the membrane, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं. ठीक है. चलिए इसका इम्प्रूव मॉडल बनाया गया. इसका इम्प्रूव मॉडल बनाया गया 1972 में. ठीक है. by Singer and Nicholson, widely accepted as fluid mosaic model.
According to this, the quasi-fluid nature of the lipid enables the lateral movement of proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. Quasi-fluid nature of the lipid enables the lateral movement of proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division, etc. The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis, and cell division. One of the most important functions of the plasma membrane is the transport of molecules across it. The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and it is called passive transport. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient from higher to lower. Water may also move across the membrane from higher to lower. Movement of water by diffusion is called osmosis. As the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid layer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient from lower to higher. Such transport of energy is dependent process in which ATP is utilized and is called active transport. Example, sodium and potassium pump. So this is the here I explained about passive transport, osmosis and active transport. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy. So neutral solutes may move across the membrane by simple diffusion along the concentration gradient. What is the concentration gradient? That is from higher to lower. Movement of water by diffusion is called osmosis. As the polar molecule cannot pass through the membrane, they require carrier proteins to pass through the membrane from against the concentration gradient from lower to higher, and for this they require energy, that is ATP, and it is called active transport. Example, sodium and potassium pump. Now next topic, cell wall. As you may recall, uh, as you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. Cell wall not only gives shape to the cell and protects the cell from mechanical damage and infection also, it also helps in cell-to-cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules. Algae has cell wall made up of cellulose, galactans, mannans, and minerals like calcium carbonate, while other plants consist of cellulose, hemicellulose, pectins, and proteins. This line is important. Algae has cell wall made up of cellulose, galactans,
minerals and minerals like calcium carbonate, while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectin, and protein. The cell wall of a young plant cell is the primary wall capable of growth, which gradually diminishes as the cell matures, and the secondary wall is formed on the inner side of the cell. The middle lamella is a layer mainly made of calcium pectate which holds or glues together different neighboring cells together. The cell wall and the middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connects the cytoplasm of the neighboring cell. तो मिडिल लेयर जो है सेल का वो नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है. चलिए तो फिर से सेल वॉल बोल देता हूँ. एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. Cell wall not only gives shape to the cell and protects the cell from mechanical damage and infection, it also helps in cell-to-cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules. Algae have cell wall made up of cellulose, galactans, mannans, and minerals like calcium carbonate, while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins, and proteins. The cell wall of a young plant cell, the primary wall, is capable of growth, which gradually diminishes as the cell matures, and the secondary wall is formed on the inner side of the cell. The middle lamella is a layer mainly consists of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cells together. The cell wall and the middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells. Now endomembrane system. While each of the membranous organelles is distinct in terms of endomembrane system. While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because of their functions are coordinated. तो अब जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, फिर भी इनके अलग अलग खुद के फंक्शंस होते हैं, पर इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका फंक्शन देयर फंक्शंस आर coordinated. The endomembrane system include endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, and vacuole. Since the function of the mitochondria, chloroplast, and perioxysomes are not coordinated with the above component, these are not considered as part of the endomembrane system. Since the functions of अच्छा कौन कौन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड है? Endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, and vacuoles. Since the function of the mitochondria is chloroplast and perioxysome are not coordinated, so
They are not included in the endomembrane system. Endoplasmic reticulum. Electron microscope studies of eukaryotic cell reveals the presence of network or reticulum of tiny tubules scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum. ये क्या है? Tiny tubular network structures में scattered है cytoplasm में. Hence, ER divides the intercellular space into two distinct compartments, luminal inside ear, extraluminal outside ear. Extraluminal जो है वो cytoplasm में स्थित है. The ear often shows ribosome attached to the outer surface. Endoplasmic reticulum में outer surface में ribosome attach होता है. ठीक है. The ear often shows ribosome attached to the outer surface. The endoplasmic reticulum the endoplasmic reticulum often shows ribosome attached to the outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum. In the absence of ribosome, they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum. ठीक है. The endoplasmic reticulum often shows ribosome attached to their outer surface. Their endoplasmic reticulum bearing ribosome on the surface is called. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना बाहर राइबोसोम लेके घूमता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है. इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी क्या नहीं है, अगर राइबोसोम नहीं है तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है. ठीक है, चलिए. तो ये हो गया. इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Rough endoplasmic reticulum is frequently observed in cells actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive. Rough endoplasmic actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. तो ये extensive होता है rough endoplasmic रेटिकुलम और ये प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन करते हैं और दे आर extensive and continuous without outer membrane of the nucleus. The smooth endoplasmic reticulum is the major site of synthesis of lipid. Smooth endoplasmic reticulum जो है वो major site of synthesis of lipid है. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है और स्मूथ ACR करता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन एनिमल सेल्स. Lipid like steroidal hormone are synthesized in ACR. ठीक है. चलिए.
Next, Golgi apparatus. Camillo Golgi, 1898, first observed densely stained reticular structures near the nucleus. These were later named as Golgi bodies after him. They consist of many flat disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 micrometer to 1.0 micrometer diameter. Okay, they are flat, disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 to 1 micrometer diameter. These are stacked parallel to each other. ये parallel stack किया जाता है. Varied number of cisternae are present in the Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or the transforming phase or concave trans or the maturing phase. The cis and the trans phase of the organelles are entirely different but are interconnected. तो Golgi body फिर से पढ़ो. Golgi complex, Galileo Golgi 1898, first observed densely stained reticular structures near the nucleus. These were the later named as Golgi bodies after him. They consist of many flat-like disc-shaped sacs और इसको सिस्टर्नी भी बोला जाता है of 0.5 to 1 micrometer in diameter. These are stacked parallel to each other in Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged. ये concentrically arranged होते हैं near the nucleus with distinct convex cis on the forming phase and the concave trans on the maturing phase. ठीक है, ये सिस फेस में अगर रहते हैं, कॉन्वेक्स में रहते हैं, इन द फॉर्मिंग फेज बोला जाता है एंड द कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज भी बोला जाता है. द सिस एंड द ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गेनेली आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड होता है. The Golgi apparatus principally performs the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets और secreted outside the cell. तो Golgi apparatus क्या करता है? पैकेजिंग करता है मटेरियल्स का जो कि इंट्रासेलुलर टारगेट्स पे डिलीवर करना होता है या तो फिर आउटसाइड सीक्रेट करना है. मटेरियल्स टू आउटसाइड द सेल. Materials to be packed in the form of vesicles from the ear endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the Golgi and move towards the maturing phase. Cis मतलब convex और trans मतलब concave. This explains why the Golgi apparatus remain in close association with the endoplasmic reticulum. A number of protein synthesis by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from the trans phase. तो number of proteins क्या किया जाता है? Synthesized by the ribosomes on the ER are modified into the cisternae of the Golgi before they are released from the trans phase. उसको modify किया जाता है कहाँ पर? Golgi apparatus के cisternae पर. क्या जो proteins release होता है ER के ribosome के वहाँ से. Golgi apparatus is the important site of formation of glycoprotein and glycolipids. Golgi apparatus क्या है? Important site है formation of glycoproteins and glycolipids. Now next topic, lysosomes. These are the membrane-bound vesicular structures. ये membrane-bound vesicular structures होते हैं. ठीक है, membrane-bound vesicular structures होते हैं. Formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. ये form हो चुके हैं. These members of these are the membrane-bound structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes like lipases, proteases, and carbohydrases, optimally active at the acidic pH. These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acid.
तो ये जो लाइसोसोम है, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। These are membrane-bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes, hydrolases, lipases, proteases, carbohydrates, optimally active होते हैं at the acidic pH. These enzymes are capable of digesting carbohydrates, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये जो एंजाइम्स है ये कैपेबल है ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के। अब वैक्यूल्स। The vacuole is the membrane-bound space found in the cytoplasm. The vacuole is the membrane-bound space found in the cytoplasm. वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। It contains water sap, excretory product, and other materials that are not useful in the cell. जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है वो सब पाया जाता है। ठीक है, सेल के लिए जो यूजफुल नहीं है। The vacuole is bound by a single membrane called tonoplast. वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। In plant cell, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell. Plants में जो cells है in plant cells the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell. 90% volume occupy कर लेता है। ठीक है, चलो। In plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other material against the concentration gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. Plants में जो है टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड द मटेरियल अगेंस्ट concentration gradient। ठीक है, चलो। In plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other materials against concentration gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. In amoeba, contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. Amoeba पे contractile vacuole बहुत ही important है for osmoregulation and excretion. In many cells, as in protists, food vacuoles are formed by engulfing the food particles. In many cells, as in protists, food vacuoles are formed by engulfing the food particles. Next है mitochondria. Unless
अच्छा, फिर से मैं वैक्यूल एक बार बता दे रहा हूँ। The vacuole is the membrane-bound space found in the cytoplasm. It contains water, sap, excretory product, and other materials not useful for the cell. The vacuole is bound by single membrane called tonoplast. In plant cell, the vacuole can occupy up to 90% of the volume of the cell. In the tonoplast facilitate the transport of a number of ions and other materials against concentration gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. In amoeba, the contractile vacuole uh, is important for osmoregulation and excretion. In many cells, as in protists, food vacuoles are formed by engulfing the food particles. Next is mitochondria. Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेट, इसको अगर स्पेसिफिकली स्टेट नहीं किया गया, आर नॉट इजीली अवेलेबल अंडर माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप में अवेलेबल नहीं होता तब तक जब तक इसको स्पेसिफिकली स्टेट नहीं किया जाता। The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cell. जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रहा है ना सेल का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो considerable degree of variability is observed. In terms of shape and size also considerable degree of variability is observed. Typically it is sausage shaped or cylindrical, having a diameter of 0.2 to 1 micrometer. एवरेज जो होता है 0.5 होता है। क्या डायमीटर, डायमीटर जो होता है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इन लेंथ, और माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, और जो लेंथ है वो 1 to 4 माइक्रोमीटर होता है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब माइटोकॉन्ड्रिया का यह देख सकते हो, इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स ग्रीन कलर का जो है वो मैट्रिक्स है, और जो रेड कलर का है डीप रेड कलर वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और जो ग्रीन कलर का और एक है वो है क्रिस्टा। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स विद द आउटर So each mitochondrion is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments, the outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called the matrix. The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. द आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री है ऑर्गेनेली का, और जो द इनर कंपार्टमेंट इज फील्ड विद डेंस होमोलोगस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। जो ग्रीन कलर का है इनर कंपार्टमेंट में डेंस होमोलोगस स्ट्रक्चर उसको बोला गया है, और वो मैट्रिक्स है। The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms a number of infoldings called the cristae. Inner membrane जो है वो उसको cristae बोला जाता है towards the matrix. The cristae increases the surface area. The cristae जो होता है वो surface area increase करता है। The two membranes have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. Mitochondria are the sites of aerobic respiration. तो mitochondria जो है वो aerobic respiration का site है। They produce cellular energy in the form of ATP. Hence, they are called powerhouse of the cell. The matrix also possesses single circular DNA molecule, a few RNA molecule, ribosome 70S, and the components required for the synthesis of protein. The mitochondria divide by fission. Mitochondria जो divide होता है वो divide होता है by fission। ठीक है, एक बार माइटोकॉन्ड्रिया मुझे लगता है आपको फिर से बता देना जरूरी है।
क्योंकि इसके बाद आप ये एग्जैक्टली एक बार ही पढ़ोगे फिर क्वेश्चन लगाओगे। Mitochondria, unless specifically stained, are not easily visible under the microscope. The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cell. In terms of shape and size also, considerable degree of variability is observed. Typically, it is sausage-shaped or cylindrical, having a diameter of 0.2 to 1 micrometer. Average जो है वो 0.5 है and length is 1.0 to 4 micrometer. Each mitochondrion is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments, the outer compartment and the inner compartment. The outer compartment and the inner compartment membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments, the outer and the inner. The inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called the matrix. The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner compartment forms a number of enfoldings called cristae towards the matrix. The cristae increases the surface area. cristae जो है वो surface area increase करता है. The two membranes have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. Mitochondria at the site of aerobic respiration and they produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called powerhouse of the cell. The matrix also possesses a single circular DNA molecule, a few RNA molecule, ribosome 70s होते हैं and the components required for synthesis of protein. Matrix also possesses single circular DNA molecule, few RNA molecules, ribosome 70s and the components required for the synthesis of proteins. The mitochondria divide by fission. Mitochondria divide होता है by fission. ठीक है. अब next है plastids. फिर okay. अब next है plastids. चलिए Plastids are found in all plant cells and in euglenoids. Plastid all plant cells में पाया जाता है और euglenoids. Euglenoids हम बाद में पढ़ेंगे. Euglenoids कहाँ पर मिलता है? प्रोटिस्टा में मिलता है. ठीक है. तो plastids are found in all plant cells and in euglenoids. These are easily observed under the microscope as they are large. Easily observe हो जाता है under the microscope as they are large. They bear some specific pigments, thus imparting specific colors to the plant. Based on the type of the pigment, plastids can be classified into chloroplast, chromoplast, and leucoplast. The chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigments. कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में और क्या है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. So which is responsible for trapping light energy that is essential for photosynthesis. In the chromoplast, fat soluble carotenoids pigments like carotene, xanthophyll and others are present. Chromoplast में क्या है? Fat soluble carotenoid pigments present है like carotene,
xanthophyll and others are present. This gives the part of the plant a yellow, orange or red color. ये yellow, orange, red color provide करता है. The leucoplasts जो है are colorless plastids of varied shapes and sizes with stored nutrients. Amyloplast stores carbohydrates, starch, example potato. Allyloplast store oils and fats. Aleuroplast store protein. So यहाँ तक क्लियर है. फिर से बता दे रहा हूँ. Plastids are found in all plant cells and in euglenoids. These are easily observed under the microscope as they are large. They bear some specific pigments, thus imparting specific colors to the plant. Based on the type of pigment, plastid can be classified into chloroplast, chromoplast, and leucoplast. The chloroplast contain chlorophyll and the carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy that is essential for photosynthesis. The chromoplast fat-soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophyll, and others are present. This gives the part of the plant a yellow, orange, or red color. The leucoplasts are the colorless plastid of varied shapes and sizes with stored nutrient. Amyloplast stores carbohydrates, starch, example potato. Allyloplast stores oils and fats, whereas the aleuroplast stores protein. ठीक है. चलिए यहाँ पर हम अच्छा ये खत्म करके फिर हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे. ठीक है. Majority of the chloroplast of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaf. जो भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है मेजोरिटी में मेसोफिल सेल्स और लीव्स में ही पाया जाता है. दे आर लेंस शेप्ड, oval, spherical, discoid or even ribbon-like organelles having variable length. 5 to 10 micrometer length है और width है 2 to 4 micrometer. Their number varies from 1 per cell to Caledomonas green alga to 20 to 40 per cell in the mesophyll. ये जो क्लोरोप्लास्ट है लीव्स में पाया जाता है. ये 1 पर सेल भी होता है क्लेमाइडोमोनस में और 20 to 40 पर सेल होता है ग्रीन एल्गा में मेसोफिल में. Majority of the chloroplast of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves. These are lens-shaped, oval and spherical, discoid or even ribbon-like. Okay. Having variable length of 5 to 10 micrometer and width 2 to 4 micrometer. The number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas, a green alga, to 20 to 40 per cell in the mesophyll. Like mitochondria, the chloroplasts are also double membrane bound. Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma. A number of organized flattened membranous sacs called thylakoids are present in the stroma. A number of organized flattened membranous sacs called thylakoids are present in the stroma. Thylakoids are arranged in ये क्या है inner the space limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma. A number of organized flattened membranous sacs are called thylakoids are present in the stroma. Thylakoids are arranged in stack like piles of coins called grana on the integral thylakoids. In addition, there are flat membranous tubules called stroma lamella connecting the thylakoids of the different grana. Grana are piles of coins called grana. Thylakoids जो होता है अरेंज रहता है piles of stock जैसे कि ग्रेना के ऊपर और जो स्ट्रोमा लेमेला होता है वो कनेक्ट करता है एक थाइलाकॉइड को दूसरे थाइलाकॉइड के ग्रेना के साथ. The members of the thylakoid enclose a space called lumen. The stroma of the chloroplast contain enzyme required for synthesis of carbohydrates and proteins. It also contains small double stranded circular DNA molecules and ribosome
Chlorophyll pigments are present in thylakoids. The ribosome of the chloroplast are smaller, 70S, and the cytoplasmic ribosome are 80S. ओके, सो अभी हम लोग 10 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे, ठीक है।
चलिए शुरू करते हैं। ब्रेक खत्म। राइबोसोम्स और द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स, ये हम लोग यूकैरियोटिक के लिए पढ़ रहे हैं। राइबोसोम वो प्रोकैरियोटिक का था। राइबोसोम, द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व कहाँ हुआ था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, एज डेंस पार्टिकल्स by George Palade, 1953. Ribosomes are the granular structures first observed under the electron microscope as dense particle by George Palade. George Palade observe किए थे first. They are composed of ribonucleic acid, RNA, and proteins and are not surrounded by any membrane. So they are composed of ribonucleic acid, RNA and proteins and are not surrounded by any membrane. ठीक है, कोई भी membrane के साथ surrounded नहीं है। The eukaryotic ribosomes are 80S while the prokaryotic ribosomes are 70S. Each ribosome has two subunits, larger and smaller subunits. So ribosomes are composed of ribonucleic acids, RNA and proteins and are not surrounded by any membrane. The eukaryotic ribosome are 80S while the prokaryotic ribosomes are 70S. Each ribosome has two subunits, larger and smaller subunits. The two subunits of 80S ribosomes are 60S and 40S while the 70S ribosomes are 50S and 30S. Okay. Here S is the Swedberg's unit. S क्या है? S Swedberg unit है. Stands for the sedimentation coefficient. Sedimentation coefficient के लिए बनता है. It is indirectly a measure of density and size. तो ये indirectly measure है density और size का. Both 70S and 80S ribosome are composed of two subunits. ठीक है, तो ये था राइबोसोम, बहुत छोटा। अब है साइटोस्केलेटन। Cytoskeleton, an elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubules. An elaborate network of filamentous proteinaceous structure, cytoskeleton, consisting of microtubules, microfilaments, and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton. The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as support, motility, maintenance of the shape of the cell. An elaborate network of what is cytoskeleton?
An elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubules, microfilaments, and the intermediate filaments present in the cytoplasm, जो cytoplasm में present है, is collectively referred to as cytoskeleton. आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में जो फोटो निकल के आया है वो देख सकते हैं, और जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubules, microfilaments, and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeleton. The cytoskeleton, let's say, are involved in many functions such as mechanical support, motility and maintenance of the shape of the cell. ये इसका फंक्शन ये तीनों है, सपोर्ट है, मोटिलिटी है और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। बस cilia and flagella. Cilia and flagella are hair-like outgrowths of the cell membrane. Cilia are small structure. Cilia are hair-like outgrowths of the cell membrane. Cilia are small structure which work like oars, causing the movement of either the cell or the cell of the surrounding fluid. Flagella are comparatively longer and responsible for cell movement. The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from the eukaryotic flagella. The electron microscopic study of a cilium or the flagellum showed that they are covered with plasma membrane. Their core, called axoneme, possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. The axoneme usually has a 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. Such an arrangement of axonemal microtubule is referred to as 9 plus 2 array. The central tubules are connected by bridges and is also enclosed by a central sheet, which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke. Thus, there are 9 radial spokes. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. Both the cilium and flagella emerge from centriole-like structure called basal bodies. ओके, तो ये था cilia and flagella. फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, cilia and flagella are hair-like outgrowths of the cell membrane. Cilia are small structure which work like oars, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. Flagella are comparatively longer and responsible for the cell movement. The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella. The electron microscope study of cilium of the flagellum showed that they are covered with plasma membrane. Their core, called the axoneme, possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. The axoneme usually has a 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. Such an arrangement of axonemal microtubules is referred to as 9 plus 2 array. The central tubules are connected by bridges and is also enclosed by a central sheet, which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a radial spoke. Thus, there are 9 radial spokes.
The peripheral doublets are interconnected by linkers. Both the cilia and flagella emerge from centriole-like structure called the basal body. Next topic is centrosome and centrioles. ठीक है. Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles. They are surrounded by amorphous pericentriolar materials. किससे surrounded है? Amorphous pericentriolar materials. Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, in which has an organization like the cartwheel. The centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles. तो दोनों cylindrical structures है centrosome, जो कि centrioles बोला जाता है, और they are surrounded by amorphous pericentriolar material. ये surround होता है amorphous pericentriolar material से. तो both the centrioles in a centrosome lies perpendicular to each other. ठीक है, perpendicular lie करता है each other के. आप देख सकते हैं डायग्राम में. they surround they both the centriole in a centrosome. centriole जो centrosome में है वो perpendicular lie करता है each other, in which is an organization like the cartwheel. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. ये बने हैं 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. Each of the peripheral fibril is a triplet. इसको triplet बोला जाता है. And the adjacent triplets are also linked. The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and called hub, which is connected with the tubules of the peripheral triplets by radial spokes made up of protein. The centrioles from the basal body of cilia or flagella and the spindle fibers that give rise to the spindle apparatus during the cell division in animal cells. अब लास्ट है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस और फिर है बस माइक्रो बॉडीज. न्यूक्लियस is a cell organelle first observed described by Robert Brown as early as 1831. Okay, 1831 में डिस्कवर हुआ था. Later the material of the nucleus sustained by the basic dyes was given name chromatin by Fleming. तो न्यूक्लियस जो डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब किया था, वो भी साल 1831 में. लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का मटेरियल है वो बेसिक डाई से स्टेन किया गया. इज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग. फ्लेमिंग जो थे वो इसको क्रोमैटिन नाम दिए. The interphase nucleus has a highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin. Interphase जो nucleus है has a highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix and one more spherical bodies called nucleoli. इसके अंदर का बात हो रहा है. हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स है जिसका वो क्रोमैटिन बोला जाता है. न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोली. Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between 10 to 50 nanometer called the perinuclear space. Perinuclear space बोला जाता है. Forms a barrier between the materials present inside the nucleus that of the cytoplasm. तो न्यूक्लियस के अंदर का जो स्पेस है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म से बैरियर करता है न्यूक्लियस के अंदर का. The outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum and also the ribosome on it. At a number of places of the nuclear envelope is interrupted by a minute pores. Nuclear envelope में minute pores से interrupt किया गया है, which are formed by the fusion of its
to membranes. These nuclear pores are the passage through which मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। वो जो न्यूक्लियर एनवेलप है उससे आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स अप जाते हैं। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कई सेल में दो दो न्यूक्लियस भी पाया जाता है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है और द न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, इसमें क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस होता है। द न्यूक्लियोली आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियली जो है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में रहते हैं। द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। It is a site for active ribosomal RNA synthesis. Content of nucleus is a continuous with the rest of the membrane bound structure. It is a site for active ribosomal RNA synthesis. Larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis. You may recall that interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin, but during the different stages of cell division, you may recall that interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin, but during different stages of cell division, cells structured chromosome in place of nucleus. Chromatin contains DNA and some basic proteins called histones. क्रोमैटिन जो होते हैं वो बेसिक प्रोटीन्स कैरी करते हैं और जिसको हिस्टोन बोला जाता है। सब नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड आरएनए। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes. You will study the details of DNA packaging in chromosome in class 12. Every chromosome visible only in dividing cells essentially has a primary constriction or the centromere, on the sides of which disc-shaped structures called kinetochores are present. Kinetochores present here. Centromere holds two chromatids of a chromosome. Based on the position of the centromere, the chromosomes can be classified into four types. The metacentric chromosome has a middle centromere forming two equal arms of the chromosome. The submetacentric chromosome has a centromere slightly away from the middle of the chromosome, resulting into one shorter arm and longer arm. In case of acrocentric chromosome, the centromere is situated across its end, forming one extremely short and one very long. Okay. Whereas telocentric chromosome has a terminal centromere. Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constrictions with a
At a constant location, this gives the appearance of a small fragment called satellite. तो satellite भी present होता है. तो metacentric में two equal arms, submetacentric में slightly move away from the center, acrocentric में one more short and one more long, and telocentric में chromosome has a terminal centromere. Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constriction at a constant location. This gives the appearance of a small fragment जिसको सैटेलाइट बोलते हैं. और नेक्स्ट है माइक्रोबॉडीज, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. तो ये हमारा सेल का चैप्टर खत्म हो गया. आज पूरा सेल हम कंप्लीट कर लिए. अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं द लिविंग वर्ल्ड, एनिमल किंगडम, और ये था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या चैप्टर पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टिश्यू से शुरुआत करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. ओके, बाय.